Sometimes people get very angry and tell us to leave, especially if they are busy with household chores and we are disturbing them. If we insist, they begin using abusive language, and there have been times when they have shut the door in our face. These experiences were shared by the lady health workers, LHWs, of Ittehad Town in Baldia, Karachi, who were deputed to administer oral polio vaccine drops to children. Like all their colleagues in the struggle against polio, the LHWs know just how high the stakes are. The success of the global effort to eradicate this paralyzing disease rests on the shoulders of these frontline healthcare staff working in high-risk zones like the one mentioned above. Inaugurating the first nationwide polio campaign of 2023 recently, Prime Minister Shehbaz Sharif pressed upon parents and caregivers to open their doors for polio workers and urged them to bring their children forward to receive the vaccine. Aiming to vaccinate slightly over 44 million under 5 children against possible disability, this is the first nationwide 5-day campaign after the catastrophic floods inundated 1/3 of the country. So far, some 75%, or 33 of the targeted children have been vaccinated. The PM's praise for polio workers rings hollow. The drive, which began on January 16, involves approximately 265,000 polio workers. However, in the districts of Hyderabad and Karachi division, the campaign has been rescheduled to start tomorrow, January 23, and run until January 27, due to the recently conducted local government elections. On the first day of the campaign, LHWs boycotted the vaccination drive, insisting that their demands be met. The Grand Health Alliance, GHA, representing different bodies of healthcare providers, including LHW unions, has been protesting against the discontinuation of the risk allowance of 17,000 rupees per month that was given to them during the COVID-19 pandemic. Withdrawn some 6 months ago, the health workers feel it is impossible to make ends meet, given the current surge in food prices, after a substantial amount has been deducted from their pay. With the pandemic no longer raging, the GHA is saying if it cannot restore the health risk allowance, the government can, at least, raise their monthly salary of 35,000 rupees to bring it at par with the income of their counterparts in other provinces. This demand is totally justified. Unfortunately, given the boycotts in other districts, the matter has not been resolved as Karachi and Hyderabad get ready to start the drive. According to the Polio Eradication Program, the Health Ministry and Expanded Program on Immunization, EPI, are still in negotiations with leaders of the GHA. However, GHA representatives say they have failed to reassure them that their concerns and demands will be addressed. In fact, the Prime Minister's words lauding the efforts of the frontline workers and thanking them for their hard work and sacrifices, saying the nation was indebted to them, ring hollow under the circumstances. Working in security-compromised areas in other provinces too, their lives are continuously at risk, which sometimes makes it impossible for them to perform their duties. Communities feel that those against the vaccine particularly target women because when the latter are killed, the fear factor increases and acts as a deterrent for families that are reluctant to admit the workers into their homes. Still, these women continue their work, despite the perils they face. There is also no denying the importance of this cohort of female health workers in the eradication of polio as known and trusted community members. Along with administering polio drops, they carry out multiple other tasks, including advising on nutrition, sanitation, and family planning. Not meeting their demands will be hugely demotivating at a time when the program faces the biggest challenge of polio workers who feel burnt out and unable to cope in these expensive times. On January 28, 2022, Pakistan had not reported a single case of a child afflicted with polio in the past 1 year. In fact, the last polio case had been reported on January 27, 2021, from Balochistan. Later, unfortunately, the country slipped and 2022 saw 20 reported cases of polio. But there has not been any case since September 22 last year. Eradicating polio is a priority and there is no room for complacency. Polio is a gateway to many other diseases. If routine immunization, EPI, is pushed through,
It will offer a long-term solution which could see education and sanitation efforts implemented as well as a polio-free Pakistan. Getting rid of polio in Pakistan and Afghanistan would mean the second infectious disease would have been eradicated from the world after smallpox. The writer is a journalist. Published in Dawn, January 22, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. कभी कभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हमें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, खास तौर पर अगर वो घरेलू कामों में मसरूफ हैं और हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। अगर हम इसरार करते हैं तो वो नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है जब उन्होंने हमारे चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया है। इन तजुर्बात का इजहार कराची के इलाके बल्दिया में इत्तेहाद टाउन की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने किया, जिन्हें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पोलियो के खिलाफ जिदोजहद में अपने तमाम साथियों की तरह LHWs भी जानते हैं कि खतरात कितने बुलंद हैं। इस मफलूज बीमारी के खात्मे की आलमी कोशिशों की कामयाबी का दारोमदार उन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर स्टाफ के कंधों पर है जो मज़कूरा बाला जैसे हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं। हाल ही में 2023 की पहली मुफ्त पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वालिदैन और देखभाल करने वालों पर जोर दिया कि वो पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दें और उन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आगे लाएं। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को मुमकिना माजूरी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ ये मुल्क भर में तबाहकुन सैलाब के बाद पहली 5 रोज़ा मुहिम है। अब तक 75% 33 मिलियन बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा चुके हैं। पोलियो वर्कर्स के लिए वज़ीर आज़म की तारीफ खोखली है। 16 जनवरी से शुरू होने वाली इस मुहिम में तकरीबन 2,65,000 पोलियो वर्कर्स शामिल हैं। ताहम हैदराबाद और कराची डिवीज़न के इज़ला में हालिया बल्दियाती इंतखाबात की वजह से इंतखाबी मुहिम कल 30 जनवरी से शुरू होकर 27 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के पहले दिन LHW ने वैक्सीनेशन मुहिम का बायकाट किया और जोर दिया कि उनके मुतालिबात पूरे किए जाएं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस GHA, जो सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के मुख्तलिफ इदारों बशमूल LHW यूनियंस की नुमाइंदगी करता है, कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान उन्हें दिए जाने वाले 17,000 रुपए माहाना के रिस्क अलाउंस को ख़त्म करने के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। तकरीबन 6 महीने पहले घर से निकाले गए तिब्बी कारकुनों को लगता है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में मौजूदा इजाफे को देखते हुए उनकी तनख्वाह से काफ़ी रकम काट ली गई है, जिसके बाद उनकी ज़रूरियात को पूरा करना नामुमकिन है। चूँकि वबाई मर्ज अब शिद्दत इख्तियार नहीं कर रहा है, GHA का कहना है कि अगर वो हेल्थ रिस्क अलाउंस को बहाल नहीं कर सकती है तो हुकूमत कम अज़ कम उनकी माहाना तनख्वाह में 35,000 रुपए का इजाफा कर सकती है ताकि इसे दूसरे सूबों में अपने हम मनसबों की आमदनी के बराबर लाया जा सके। ये मुतालबा मुकम्मल तौर पर जायज़ है। बदकिस्मती से दीगर अज़ला में बायकाट की वजह से ये मामला हल नहीं हुआ, क्योंकि कराची और हैदराबाद मुहिम शुरू करने के लिए तैयार हैं। पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम के मुताबिक वज़ारत सेहत और तौसी प्रोग्राम बराए इम्यूनाइजेशन EPI अब भी GHA के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात में है। ताहम GHA के नुमाइंदों का कहना है कि वो उन्हें यकीन दिलाने में नाकाम रहे हैं कि उनके खदशात और मुतालिबात को हल किया जाएगा। दरहकीकत वज़ीर आज़म ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की काविशों को सराहते हुए उनकी मेहनत और कुर्बानियों पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कौम उनकी मकरूज़ है और हालात में खोखली है। दूसरे सूबों में भी सिक्योरिटी से मुतासरा इलाकों में काम करने से उनकी जिंदगियां मुसलसल खतरे में रहती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औकात उनके लिए अपने फ़राइज़ की अंजामदही नामुमकिन हो जाती है। कम्युनिटीज़ को लगता है कि वैक्सीन के खिलाफ काम करने वाले ख़ास तौर पर ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, क्योंकि जब वैक्सीन को मार दिया जाता है तो खौफ का उनसर बढ़ जाता है और उन ख़ानदानों के लिए एक रुकावट के तौर पर काम करता है जो कारकुनों को अपने घरों में दाखिल करने से हिचकिचाते हैं। फिर भी ये औरतें खतरात का सामना करने के बावजूद अपना काम जारी रखे हुए हैं।
पोलियो के खात्मे में ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स के इस ग्रुप की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि मरूफ और काबिल एतमाद कम्युनिटी मेंबरान हैं। पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ वो ग़िज़ाइयत, सफाई सुथराई और ख़ानदानी मनसूबा बंदी के बारे में मशवरा देने समेत कई दीगर काम भी अंजाम देते हैं। उनके मुतालिबात पूरे न करना एक ऐसे वक्त में इंतहाई हौसला शिकन होगा जब इस प्रोग्राम को पोलियो वर्कर्स के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, जो खुद को झुलसा हुआ महसूस करते हैं और इस महंगे वक्त का मुकाबला करने से कासिर हैं। 28 जनवरी 2022 को पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान पोलियो से मुतासरा एक भी बच्चे का केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। पोलियो का आखिरी केस 27 जनवरी 2021 को बलोचिस्तान से सामने आया था। बाद अज़ा बदकिस्मती से मुल्क में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन पिछले साल सितंबर के बाद से कोई मामला सामने नहीं आया है। पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है और इत्मीनान की कोई गुंजाइश नहीं है। पोलियो बहुत सी दीगर बीमारियों का गेटवे है। अगर मामूल के हिफाजती टीकों EPI को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक तवील मुद्दती हल पेश करेगा, जिसमें तालीम और सफाई सुथराई की कोशिशों पर अमल दरामद के साथ साथ पोलियो से पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो से छुटकारा हासिल करने का मतलब ये होगा कि चीचक के बाद दुनिया से दूसरी मुतअद्दी बीमारी का खात्मा हो जाएगा। मजमून निगार एक सहाफ़ी हैं। अखज़ शुदा बतारीख 22 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.